Today our topic is again coordinate geometry. We do question number 2 of the exercise 7.2. Yesterday I have write some basic concept, basic formula for coordinate geometry. By these formulas, by these concept, we can find out different problems, different questions of different exercise. Here is the question I have choose. Find the coordinate of the points of a trisection of a line segment join 4, coordinate point 4, -1 and coordinate point -2, -3. We need a line. A line here this is a line. We divide it by trisection. It means that if A is a point, B is a point, the coordinate point of A, we take the coordinate point of this is a 4, -1, and this is a coordinate point of a B is -2, -3. These are the coordinate point of A. This is the AB line segment. We divide it trisection. It means that if AP, Q, P and Q, these divide P and Q, divide this line in trisection. It means that AP is equal to PQ, PQ is equal to QB. That means if we divide this line by trisection, it means that AP, P and Q are here the point who divide this line in trisection. We have already here given that A has been coordinate point 4, -1 and B has been coordinate point -2, -3. These are how we can find out the solution of this question. Let we take the P, X, Y and Q. We already know that every point has a coordinate point X and Y. So let the P, X, Y and Q, X, Y be the points of the trisection of A. 4, the coordinate point of A is 4, -1 and B, the coordinate B is -3, -3. -2, -3. Here, that meaning AP equal to PQ equal to QB. That means the AP is equal to QP and it is equal to QB. Here, I already make it. This AB is a line. The coordinate point of A is 4, -1 and coordinate point of B is -2, -3. P and Q, it is a trisection. By this P or Q, we divide this line in trisection. That means AP is equal to PQ equal to QB. Let P divide AB in tri. अब हम क्या करेंगे? देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है. हमें A और B के कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए गए हैं. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 7.2. इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट हम यहाँ P और Q इसके 3 हिस्से करते हैं. इसके 3 यानी आपको ये पता होना चाहिए कि AP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB यानी बराबर ये इक्वल है. लेकिन हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट यानी A और B के कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए गए हैं. चलो हम किस तरह करेंगे, मतलब P के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं, Q के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालने हैं. P डिवाइड AB इन रेशियो ऑफ 1/2. इट इज वेरी इजी. पहली बार जब हम इस लाइन को मिसाल के तौर पर यहाँ लाइन लेते हैं, ये है लाइन AB. तो आप देखिए ये P जो है ये इस अगर आप Q को हटाएंगे, यहाँ Q नहीं लिखेंगे, आप देखेंगे ये 1:2 यानी ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है. यानी AP जो है एक हिस्सा है और P भी 2 हिस्से है. इसका मतलब इसको हम 1:2 कहेंगे. इसको हम कहते हैं 1:2 यानी एक हिस्सा और 2 हिस्से.
यानी यहाँ ये लाइन एक हिस्से, जब P को हम लेते हैं तो ये एक हिस्सा बनता है, और PB जो है, AP जो है एक हिस्सा, PB जो है ये दो हिस्से हैं, यानी PQ और QB। तो यहाँ हमें 1:2 बाय दिस सेक्शन फॉर्मूला, कल मैंने आपको बताया था सेक्शन फार्मूला क्या है। सेक्शन फार्मूला है x किसके बराबर होता है, x बराबर होता है कोऑर्डिनेट ऑफ द P comma x p x comma y, these are the coordinate point of a P R। अब हमें x निकालना है और हमें y निकालना है। हम क्या करेंगे, हमें कल मैंने दिए थे इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बुनियादी जो कंसेप्ट है, बुनियादी जो फार्मूला है, वो कल मैंने यहाँ डाले हैं। मतलब कल आप लोगों को बताया, कल मैंने वीडियो डाला है, उस पर आपको बताया। एक्स जो होता है किसी सेक्शन फार्मूला हमारे पास है m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस 1। बाय दिस फार्मूला वी कैन यूज फाइंड आउट द एक्स। आप यहाँ देखिए m क्या है, देखिए आप यहाँ, बिकॉज आप देखिए यहाँ जो है m जो है 1, यानी इसको हम ट्राई सेक्शन करते हैं, ये 1 ये 2, ये दो हिस्से हैं। तो अगर हम m को 1 n को 2 के बराबर लेते हैं, क्योंकि इसको हम a को दो हिस्से में तकसीम करते हैं, तो जब m का वैल्यू जो है वो 1 है। लेकिन आप देखिए x2 क्या है, यहाँ x2 आप देखेंगे यहाँ -3 है, तो x2 है -2, तो b के पॉइंट देखिए आप -2 प्लस 2, क्योंकि ये n जो है इसको हमने दो हिस्सों में रखा, 2 इंटू 4। आप देखिए यहाँ x1 क्या है, 4 डिवाइड बाई m प्लस n, यानी 1 प्लस 2। आप देखेंगे ये m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाई m प्लस n इक्वल टू 1 इंटू 2 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 1 प्लस, यानी ये 1 है, 1 इसका 1 पार्ट, ये 2 है, यानी n जो है ये दो हिस्से है, तो डिवाइड में 1 प्लस 2 होता है। लेकिन यहाँ x2, क्योंकि x2 -2 है और x1 4 है, तो 4 आप देखिए इनको ऑफ द 2 1 इंटू 1 प्लस 4 2 8 डिवाइड बाई 3, ये 8 subtraction by 2 here we get the 6 divided by 3 is equal to 2. Same we do here the y, the way coordinate point of the y. How we can find out the y? M you know already know 1, n equal to 2, that means the 1 into here the x2 y2 3 and y1 minus 1. So here we put the value x3 y3 y2 minus 3, 1 into minus 3 plus 2, yani we divide it 1 into 2 ratio. 2 into n, value of the n is 2, and here x y1 equal to minus 1. So here 1 plus 2, that means minus 3 plus 2, minus 3 minus 2, because 3 into 1, 2 into 1, minus 2 divided by 3, that is 5 by 3, this is equal to 2. So hence the coordinate point of the P x comma y is equal to P. Here we get the coordinate point 2, x here 2, and y equal to 5 minus 5 by 3. So the coordinate point of P into x comma y equal to P into 2 minus 2 comma minus 5 by 3. So by this formula, हम इस फार्मूला के जरिए हमने P के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाले, यहाँ P के कोऑर्डिनेट पॉइंट निकाले। अब हम करेंगे Q के कोऑर्डिनेट पॉइंट। आप देखिए Q डिवाइड द AB in the ratio of 2:1 by the section formula, coordinate of the Q into x comma y r। देखिए यहाँ क्या होता है, फोर कॉमा माइनस 1, ये A के कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ये B के कोऑर्डिनेट। लेकिन अभी तक हमने P निकाला, अब हम Q को निकालेंगे। आप देखिए यहाँ ये कितने, यहाँ से यहाँ तक दो हिस्से हैं, ये एक हिस्सा है, Q से B तक एक हिस्सा और A से Q तक दो हिस्से हैं। अब रेशो क्या बनता है, अब रेशो बनेगा 2:1। यहाँ हम टेक करेंगे M, because
m ratio n, that means 2 into ratio 1. यहाँ आपने ऊपर से देखा, जब आप p के वैल्यू निकाल दें तो m रेशो n 1 into 2. यहाँ आपने p जो है ये 1 into 2, ये 1 into 2 करता है डिवाइड. लेकिन जब हम q को लेते हैं तो ये क्या बनता है, आप देखिए 2:1, 2:1, यानी यहाँ a से q तक. आप देखिए ये a से q तक जो है ये 2 हिस्से है, और ये यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा है, ये 2 हिस्से है. तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ m अब यहाँ चेंज हो जाए. यहाँ ऊपर देखिए आप m रेशो n 1 into 1:2, लेकिन यहाँ हो जाएगा m रेशो n 2 into 1. यहाँ क्योंकि q जो है ये 2 into 1, यानी इसके 2 हिस्से यहाँ हैं. आप देखिए AP, PQ and QB. ये AP एक हिस्सा है, PQ दूसरा हिस्सा है, यानी 2 हिस्से और एक. अब हम इस q जो है ये डिवाइड करता है 2:1. क्या करता है, P जो डिवाइड करता है, यहाँ आपने देखा, यहाँ P जो डिवाइड करता है वो करता है 1:2. लेकिन Q जो डिवाइड करता है 2:1 बाय द सेक्शन फार्मूला. यहाँ हम वही सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करेंगे. तो वी कैन फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ Q x, y, that is x is here m. You already know that this formula m into x2 plus n into x1 divided by m. कल मैंने बताया आपको, कल भी वीडियो भी डाला, इस तरह भी बताया आप लोगों को. तो हम यहाँ पुट वैल्यू करेंगे. देखिए यहाँ आपने देखा, यहाँ 1 m का वैल्यू 1 था और n का वैल्यू 2 था. देखिए यहाँ चेंज होगा, यहाँ m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 1 है. अब वही कोऑर्डिनेट पॉइंट आपने देखे x1, यानी आप देखेंगे a के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 4, यानी x2 जो है वो -2 है, और x1 क्या है 4. हम यहाँ पुट करेंगे 2 into -2 plus 1 into 4 divided by 2 plus 1. यहाँ आप देखेंगे -4 plus 4 divided by 3, that means 0/3 और x is equal to 0. तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकला, 0. अब आप आते हैं y के कोऑर्डिनेट पॉइंट. y किसके बराबर निकलेगा, y होता है आपका ऑलरेडी यू नो डेट हियर m into x plus 2 into plus n into y1 m into y2 plus n into y1 divided by m plus n. That means here is the same formula. So here you should be note that here the m is 1 and n is 2. But when we take the q, here this is the p. When we take the p, this is the q. When we take the q, divide the q is divide this 2 into 1, but p divide 1 into 2. So p divide 1 into 2 and q divide 2 into 1. That meaning here you should be note the p divide 1 into 2, but q divide 2 into 1. That means here the m is the value of 2 and is the value of the 1. But same as this you have to already, then you know that the y2 is -3 and y1 is -1. So we put the y2 -3 plus y1 -1. That means 2 into 3, 1 into -1 plus 2 plus 1. That is 3 to the -6 -1 divided by 3. That is equal to -7 by 2, 3. Hence the coordinate point of q x, y is equal to 0, here you should be note this is the coordinate point. The coordinate point of x in q is 0. The coordinate point of a y in q is -7 by 3. Hence q coordinate point of x, y is q 0, -7. But here you should be note that when p divide, the coordinate point is, this is the coordinate point of the p, and this is the coordinate point of a q. When p divide, it is divide 1 into 2. When q, we take the q is divide 2 into 1. So by this section formula we can find out the coordinate point of p and q. Thanks.